हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे नए मॉनिटर LG 4K 550 IPS 60 Hz monitor. This box is pretty much large, so I just thought to put up two cameras. One is there and one is here, so that I can cover all the unboxing in the two frames. So without wasting any time, let's just unbox this and let's see क्या बॉक्स के अंदर आता है। So सबसे पहले we have this, जिसमें हमारी केबल है, पावर अडेप्टर है एंड इसको माउंट करने के लिए इसका स्टैंड है। तो लेट मी जस्ट कीप दिस हियर एंड सी द एक्चुअल थिंग। तो इसको इसके अंदर अटैच करने के लिए what you need to do, you just have to, that's it, and here is your monitor. This is my Mac and इसको Mac को रखते हैं यहाँ पे। So now I am almost done with the setup. So this is how it looks like. बेजल्स हैं बट ब्लैक वाला फील है, तो इतना अपीयर नहीं होता स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोर्ट की। तो इट हैज़ टू पोर्ट्स, टू HDMI पोर्ट, वन पावर पोर्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस it has a very nice display which gives a feel of 4K, and 60 Hz is fine for me because I'm not going to play any game into this, so it is fine for me. One thing जो मैंने notice की है, which is while I'm connecting this monitor with my Mac Mini, उस टाइम पे 60 Hz पे it doesn't work. At the same time जब मैं इसको मेरे Mac M1 Pro लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करता हूँ तो इट्स वर्किंग ऑन 60 Hz. So ये दो चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कलर ग्रेडिंग इज जस्ट अमेजिंग। स्पीकर नहीं है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस Mac and this monitor, how's the compatibility between these two, so just ask me in the comment box. I'll try to answer those as well.